Friends, in this video we'll be solving few questions on solenoid. Let's start with the first one. A long solenoid has 1000 turns in 5 meter. Find field inside outside it if current is 2 ampere which flows through it. तो क्या है, आपके पास 1000 turns है in 5 meters, so capital N 1000, total number of turns, total length is 5 meter, so small n, number of turns per unit length will be 1000 by 5, 200 turns per meter. फील्ड इनसाइड, फील्ड का एक्सप्रेशन बहुत ही सिंपल होता है. इनसाइड के लिए म्यू नॉट एन आई, so it will be mu naught, n is 200, I is 2, so expression will be 400 mu naught. Mu naught की वैल्यू डाल के we can get the answer. And B outside, as we know B outside is 0 for a long solenoid and B inside is uniform throughout the solenoid. Next question is long solenoid है which is cut into 3 parts lengthwise in the ratio 1:2:3. If the original solenoid has length L, resistance R, number of turns per length N. Find these in new segments. इन सब की वैल्यू नए सेगमेंट्स के लिए बतानी है. रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन द गिवन सर्किट. ये ऑब्वियसली पहला पोर्शन है, ये दूसरा पोर्शन है, ये तीसरा पोर्शन है. ओके, सो व्हेन L इज डिवाइडेड, मान लेते हैं ये लेंथ L थी, इसको आपने 1:2:3 में बांट दिया. ओके, 1:2:3 में बांट दिया, तो x 2x 3x बोल सकते हो, और सब मिलकर L दे रहे थे इक्वल टू L. तो हमें मिला x इज नथिंग बट 3 + 2 + 1 L/6. ठीक है, so length L1 is L/6, L2 is 2 times of that, 2L/6 means L/3, L3 is 3 times L/6 means L/2. So these are the length. As resistance is proportional to the length, resistance will also be, R1 will be R/6, R2 will be R/3, R3 will be R/2. Okay, and number of turns will remain same per unit length. It will remain same, N will be same because you have just cut the portion, the number of turns and the length. Again I'm saying number of turns and the length both will become 1/6 times, but number of turns per unit length will remain same, as the property of the solenoid hasn't changed. Okay, so N will remain same. You have just cut it. In every meter the number of turns will remain same. So it is like density. When you cut a rod, you can't change the density by cutting a rod. Okay, so it is number of turns in a meter. You can't change that value by cutting a rod or solenoid. So in the given figure, let's say we know that this resistance is R/3, this resistance is R/2, so the ratio is 2:3. Okay, if we call this resistance as and this resistance is R/6. Okay, let's say the current here is 3I, so the current here should be 2I in the inverse ratio, and the current here should be 5I. Again I've assumed 3I just because of this, so that I can easily get 2I here, 5I here. And you must know how to divide current in parallel and series. So B1 is mu naught N1 I1, okay, which is mu naught N 5I. B2 is mu naught N2 I2, which is mu naught N
I2 is simply 3I, and similarly V3 is mu naught n into 2I. So V1 is to V2 is to V3 will be 5 is to 3 is to 2. Okay. The next question is quite famous. A long solenoid is made from a wire of diameter d. Then we have to find the number of turns per unit length. Okay. In that we have to assume that the wire is wound such that there is no gap between two consecutive turns. So let's say in L length there are n turns. Okay, that is again the cross section which I showed while deriving this. यहाँ इनका दूसरा व्यू भी है ऐसे ऐसे करके, तो करंट अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, एंड सो ऑन. ठीक है, तो एक लेंथ में एल लेंथ में मान लेते हैं एन टर्न्स है, एन टर्न्स. तो मैं लिख सकता हूँ हर एक डिस्टेंस डी है, दिस डिस्टेंस, तो एल विल बी नथिंग बट कैपिटल एन डी, एंड नंबर ऑफ टर्न्स, एक सेकेंड, एल इज नथिंग बट हाँ कैपिटल एन इंटू डी. नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ is L by N, capital L, capital N, total number of turns by length. दोबारा से L लेंथ में मान लिया कैपिटल N टोटल टर्न्स आ रहे हैं, हर एक D है, तो ये जो लेंथ है ये हो जाएगी N टाइम्स D. अब आपको निकालना है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो इतने टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, इतनी टोटल लेंथ, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आ रहे हैं आपके 1/d. ठीक है, यूनिट्स का ध्यान रखें. लेट से d ऐसे दिया है 1 मिलीमीटर, तो n की वैल्यू जो आएगी वो 1/1 मिलीमीटर मीन्स 10⁻³ मीन्स 1000. ओके, स्टैंडर्ड यूनिट में करके फिर आप आंसर दें. फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर व्हेन करंट पासेस थ्रू इट, व्हेन I करंट पासेस थ्रू इट. अगेन 6 मीटर की इसका डायमीटर है, 8 मीटर इसकी लेंथ है. इट्स नॉट अ लॉन्ग सोलेनॉइड. तो सेंटर पे अगर हम देखें, ये कुछ यहाँ एंगल बनाएगा और ऐसा ही कुछ एंगल यहाँ भी बनेगा. ये एंगल अगर थीटा है तो सिमेट्री से इस एंगल को भी हम थीटा बोल सकते हैं, और थीटा की वैल्यू हमें एक ट्रायंगल से मिल रही है. ये साइड 3 है और ये साइड 4 है, तो थीटा कुछ और नहीं 37 डिग्री है. मगर हाँ, व्हाट इज थीटा 1? यहाँ से हमने थीटा 1 नापा, थीटा 1 इज थीटा विच इज 37. व्हाट इज थीटा 2? थीटा 2 ये पूरा एंगल होता है यहाँ तक. थीटा 2 इज 180 माइनस 37 विच इज 143 डिग्रीज, और 180 माइनस 37 यूज करते हैं. एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट NI by 2 cos 37 minus cos 180 minus 37. So it will become 2 times cos 37, 2 गायब हो जाएगा, म्यू नॉट NI cos 37 will be the answer. Again, toroid has 1000 turns. अंदर वाली रेडियस 19.5, बाहर वाली 20.5. करंट I फ्लो कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड बतानी है इस रीजन में. तो अगेन सबसे पहले हम निकालते हैं लेंथ के लिए R मीन चाहिए. मीन रेडियस इज RN plus R out by 2, and that will come out to be 19.5 plus 20.5 by 2, 20 आ जाएगा. और लेंथ आ गई हमारे पास टोटल 2 पाई R मीन. तो हमारे पास नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ भी आ गए. टोटल टर्न्स हमारे पास 1000 और 2 पाई इंटू 20 लेंथ है. तो अगर हम 20 से इसको गायब कर दें
25 by pi turns per meter, and magnetic field will be mu naught small n I. Can get the expression for 25 by pi into I. Okay, so this is how we get the field inside a toroid. It has no poles. बाहर field 0 होगी. Okay, thank you.